Hello dear students, in this video we will solve chapter 12th Heuron formula. Where is Heuron formula used? Heuron formula used for calculating area of triangle whose sides are A, B, C as given. बेटे हीरोन फॉर्मूला हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए यूज करते हैं. जैसे राइट एंगल ट्राइंगल का सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट. Similarly, if all sides of triangles are different and all angles are acute, acute means अगर किसी ट्राइंगल के सारे एंगल्स 180 से कम हैं, तो इस टाइप के ट्राइंगल के लिए हम हीरोन फॉर्मूले को यूज करते हैं जिसकी डिफरेंट साइड्स हैं. नाउ we have one triangle like this whose sides are given. I suppose this side is A, length of this side is A. Name this triangle ABC. Length of AB is A, length of BC is B, length of AC is C. Now we have to calculate the area of this triangle ABC and given sides A, B and C. Small a, small b, small c. Now AR means area of triangle ABC. A is short form of AR is short form of area. So area of triangle ABC is equal to root. ये बेटे स्क्वायर रूट है. Firstly we S minus A. S is semi perimeter. S minus first side, S minus second side, S minus third side. This is a formula, Heuron formula to calculate the area of triangles. Now, how can we find S? S means semi-perimeter. Semi-perimeter means perimeter means sum of all sides. Now, sum of all sides means A plus B plus C. S means semi. So, we have to divide A plus B plus C by 2. A plus B plus C is perimeter. Perimeter is divided by 2. Then it is said to be a semi-perimeter. S means semi-perimeter. Now, exercise 12.1 question first. A traffic signal board indicating school ahead in an equilateral triangle with side A. ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड बना हुआ है बेटे, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में बना हुआ है. उस पर क्या इंडिकेट किया गया है, स्कूल अहेड. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड. उस सिग्नल बोर्ड का हमने एरिया फाइंड करना है यूजिंग हीरोन फॉर्मूला. हीरोन फॉर्मूले की हेल्प से. इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर और हमें इस सिग्नल बोर्ड का पेरीमीटर गिवन दिया गया है 180 सेंटीमीटर. व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, और हमने उस सिग्नल बोर्ड का एरिया बताना है. और उसकी साइड हमें दी गई है A और पेरीमीटर दिया गया है 180. फर्स्टली we will find the area of equilateral triangle means area of signal board with the help of side A. We have given equilateral triangle means all sides of triangle, all sides of triangle will be A. Now in this question we are given equilateral triangle with side A. Let this is equilateral triangle A, B, C, and this is signal board in form of equilateral triangle, and here is written as school ahead. Now we have to find the area of this triangle at signal board whose sides are A. Because it is equilateral triangle, so all sides of the signal board is same. If AB is A, then BC is also A, AC is also A. Sides of equilateral triangle are all equal. Now, for Heuron formula, we have to find firstly semi-perimeter. Semi-perimeter means S. Now, perimeter of equilateral triangle means sum of all sides. All sides means AB plus BC plus CA.
Perimeter of equilateral triangle is equal to, perimeter means sum of all sides. Now we have three sides, one side AB, other side BC, third side AC. Length of all these sides are A and A. So A plus A plus A. This is perimeter of equilateral triangle. Now semi-perimeter means S. We have to find the S. S means sum of all three sides. First side A, second side A, third side A, divided by always by 2. Semi-perimeter is divided by 2. Perimeter is divided by 2. So its name is semi-perimeter. So now A plus A means we have to add only coefficient. Here nothing is there, means there is 1. अगर A के आगे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, 1. जब भी हम वेरिएबल्स को ऐड करते हैं लाइक वेरिएबल्स, तो उसके सिर्फ कोफिशिएंट को ऐड करना है. लाइक 1 + 1 2, 2 + 1 3. वेरिएबल क्या है, A. वेरिएबल चेंज नहीं होएगा, वेरिएबल को ऐसे ही लिखना है, सिर्फ आपने उसके कोफिशिएंट्स को ऐड करना है. 3a/2. Now we calculate S is equal to 3a/2. Now apply Heron formula. What is the Heron formula? Area of triangle ABC is square root S. S is semi perimeter. फिर सेमी पेरीमीटर में से तीनों साइड्स को माइनस करना है. पहले फर्स्ट साइड, फिर सेमी पेरीमीटर में से सेकंड साइड, फिर सेमी पेरीमीटर में से थर्ड साइड. नाउ यूजिंग Heron formula, area of triangle is equal to square root S minus first side, that is A, S minus second side is also in right firstly formula, S minus A, S minus B, S minus C. This is a formula, Heron formula. Now S is 3a/2. We calculate the semi perimeter. Now S minus A. S is 3a/2. A is first side. Now again S minus B means second side. S is 3a/2 minus second side is A. Third side is also A. Now solve this. 3a/2. Now by taking LCM, बेटे सबसे पहले 2 और 1 का LCM 2. LCM को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो, जितना आंसर आ जाए न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हो. लाइक 2 इज डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1. 1 को 3a से मल्टीप्लाई किया, 3a. सिमिलरली 1 इज डिवाइडेड बाय 2, our answer is 2. 2 is multiplied by a, 2a. Like all this 3a minus 2a, because all terms are same. 3a minus 2a/2. Now 3a/2, 3 minus 2, only coefficient will be subtracted. 3 minus 2, 1. There is no need to write 1, so only write a/2, a/2, a/2. Now 3 a/2, 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 a/2. So it can also written a/2 base power 4. Now taking square root 3, हमने दोनों के ऊपर रूट को अलग अलग कर दिया. √3 √a/2 power 4. Now √3 root means 1/2, a/2 power 4. जब हम रूट हटाते हैं तो इसकी जगह हम लिखते हैं 1/2. These powers are multiplied, so 2 1s are 2, 2 2s are 4. So √3 a/2 raised power 2. Power 2 means we have to multiply these terms by 2 times. So √3 a square/4.
2 to the 4. Now area of triangle, area of equilateral triangle is root 3 upon root 3 a square upon 4. A is a side of triangle. Now this is the first part. We have to find the area of a triangle. Now if the perimeter is given, now we will find the area of a triangle. Now perimeter second part. This is the second part of question. Perimeter of triangle is 180. Now perimeter is A, first side is A, second side is also A, third side is A. Perimeter means sum of all sides. 3A upon 180. A is 180 by 3, 60. Means now we have to find the area of triangle whose sides are 60. Like this. This is a triangle. Now equilateral triangle. If one side is 60, that means all sides are 60. Now in second part, when we are given perimeter of triangle is 180, and now we have to find the area of triangle. Given side A is equal to 60. Now there are two ways. बेटे एक तो आप स्टार्टिंग से हीरो फॉर्मूला की तरह कर सकते हो. सेकंड, आप A is equal to 60, put this value in equation first. Equation first is root 3 upon 4 A. Now area of triangle from first root 3 upon 4 A square. A means side of triangle. Side is 60. Square means 60 square means 60 multiply 60. Now solve this. Now root 3 by 4. If these can be cancelled. 60 multiply 60, 36 under. 4 1 are 4, 4 9 are 36. That is 900 root 3 centimeter square. Because we have find the area. Unit of area is always written as in square. So centimeter square. Now question second. Now second question. The triangular side walls of flyover has been used for advertisement. The sides of walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? बेटे इस क्वेश्चन में हमें पहले एक फ्लाईओवर दिया गया है जिसकी फ्लाईओवर की वॉल्स को एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जा रहा है, which whose sides are length of whose sides are 122 and 120 and 20. हमें उसकी तीन साइड्स दी गई हैं. एक की लेंथ है 122, 122, 22 and 120 meter. Let the sides of triangular side walls of flyover meters A, B and C are. A is 122 given, B is 22 meter, C is 120 meter. Now this is flyover. The walls of three flyovers are length of one wall is 122, length of second wall is 120, length of third wall is 20. These walls are used for advertisements. Now firstly we will find the area for advertisement. How much area is used for advertisement? Now firstly find the area of, because it is in the shape of a triangle. So we will find the area of a triangle. How to find the area of triangle? Firstly find the perimeter. S semi-perimeter means sum of all sides. 122 plus 22 plus 122 upon 2. That is 264 upon 2, 132 meter. 132 means the semi-perimeter. Now to find the area of triangle, root
firstly write S. S is 132. Then write S minus first side. 132 minus first side is 122. S minus B. B means second side is 22. S minus third side means 120. Now solve this. 132. 132 minus 122, 10. 132 minus 22, 110. 132 minus 120, 12. Now how to solve this type of multiplication? Firstly, make the factors of each term. पहले हम 132 के फैक्टर्स बनाएंगे, फिर हम 10 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, फिर हम 110 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, फिर हम 12 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे. ट्राई टू मेक द प्राइम फैक्टर्स. बेटे पहले 132 के फैक्टर्स कैसे बनाने, लाइक प्राइम फैक्टर्स मीन्स डिवाइड बाय 2, 3, 5 ऐसे नंबर से अपने डिवाइड करना जो किसी से डिवाइड ना हो ना. फर्स्ट डिवाइड बाय 2, 6, 6. देन अगेन डिवाइड बाय 2, 33. नाउ 3 पे गया ये 11, 30. 132 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स बन गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11. नाउ write down the prime factors of 132. 2 multiply 2 multiply 3 multiply 11. Now write down the prime factors of 10. Next number 10 is 5 multiply 2. Again write down the prime factors of 110. Make the prime factors of 110. Firstly divide by 2. 2 5s are 10, 2 5s are 10. And it goes on 5. 11. So prime factors of 110 is 2 multiply 5 multiply 11. Now we have left with only one number, that is 12. Now make the factors of prime factors of 12. 2 2s are 4, 4 3s are 12. These are all prime factors of numbers which cannot further divide, factorized. Like now पहले सब नंबर्स को इकट्ठा कर लो. जैसे 2 मल्टीप्लाई 2, पहले ऑल 2s 1 2 3 4 5 6. So 2 write 6 times. Now write 3 1 2. 3 comes 2 times, so write 2 times. After that 5 1 2. 5 is also 2 times, write 2 times. Then 11. 11 is also 2 times, write 11 into 11. Now we have to find the square root. Square root में हमें हमेशा 2 2 के पेयर्स बनाने हैं. Like 1 pair, 2 second pair, 2 2 नंबर्स के सेम 2 नंबर्स के पेयर बनाने हैं. जैसे 2 into 2 1 pair, 2 into 2 next pair, 2 into 2 थर्ड पेयर हो गया ये हमारा, 3 into 3 फोर्थ पेयर हो गया, फिफ्थ पेयर हो गया एंड 6 पेयर हो गया. हमने सभी नंबर्स के पेयर बना ली. इसके बाद आपने एक एक पेयर में से सिंगल नंबर स्क्वायर रूट के बाहर आता है. जैसे 2 into 2 एक पेयर है, इसमें से सिंगल 2 बाहर स्क्वायर रूट के बाहर. इसमें से सिंगल 2, इस पेयर में से सिंगल 2, इस पेयर में से सिंगल 3, इस पेयर में से सिंगल 5, इस पेयर में से सिंगल 11. नाउ मल्टीप्लाई ऑल दीज टर्म्स. 2 2s are 4, 2s are 8, 3s are 24. 24 को जब आप 5 से करोगे 120, 120 को जब 11 से करोगे तो आपका आंसर आएगा 1320. नाउ it is an area of triangle, so unit of area of triangle is meter square. Now first part is done. Now second part में हमें दिया गया है the advertisement yield an earning of 5000 per meter square per year. उस एडवर्टाइजमेंट की जो हमें अर्निंग हो रही है 1 ईयर में पर मीटर स्क्वायर हमें 5000 रुपीज मिल रहा है. 1 ईयर में पर मीटर स्क्वायर हाउ मच मनी वी अर्न 5000. इन दिस क्वेश्चन दिया गया है हमें कि उस एक साल में 1 मीटर स्क्वायर की जो अर्निंग है दैट इज 5000. देन फॉर एडवर्टाइजमेंट
ऑन वॉल फॉर 1 ईयर, हमें 1 ईयर की दिया गया है, पर मीटर स्क्वायर इज ₹5000। उस वॉल्स पे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो रेंट पे करना पड़ रहा है वो करना पड़ 5000 है रेंट। नाउ this is rent for 1 year. Now we will find rent for 1 month. 1 year में how many months? 12 months. So rent for a month. Month means we have to find 1 month, which is rent for 12 months. So divide by 12 to find the month for rent for 1 month. Now 5000 upon 12 per meter square. Now we have to find the rent for 3 months. Now rent for 3 months, 5000 upon 2, 12 multiplied by 3. 3 4s are. Now rent for 3 months is, after doing calculation, 1250 per meter square. This is the rent for 3 months for meter square space. Now area of triangle is 1320 meter square. We have space of 132 meter square. Now rent for 1 meter square is 1250. Rent for 1320 meter square space is, multiply these numbers. Now rent paid for 1320 meter square space. For per meter square, 1 meter square के लिए 1250. Rent for 1320 के लिए multiply by 1320 meter square. Not meter square, so we have to find the rent. So multiply these numbers. Our answer is 16540. Rent is paid for 3 months for space used 1320 meter square is 1654 times 0. This is rent for triangular sides of walls for 3 months is 1654 times 0. Thank you.